everyone, and in this video we are going to make a sticker book. So let's get started. So first you have to draw stickers, of course. Like I am drawing, you can draw as many stickers as you can. It totally depends on your wish. So here I am drawing so many stickers so that I can have an exact collection of it. Now we are just going to color it so that it looks attractive, and we have done it. Now we just have to cut it out in order to make it as a sticker. So you can just cut it out. I know it's a little bit time taking, but I think you can do it. Now just take a plastic sheet. Anything can be used, either a poly bag or any transparent cover. So first apply tape on the sheet and then put the sticker upwards, and then apply the cello tape again so that our sticker looks shiny. Same way, just do everything with every particular stickers, and then we will be done of making with our stickers. Then in the next part we will see how to make a sticker book. So first cut out the stickers with the plastic sheet, and then I have done with all of it. So now our stickers are totally ready, and now we are just going to make a folder for it. For this you can take any plastic wrapper, either of the dresses or of any supplies. Then you have to cut it according to your stickers that you have made. I mean the number of stickers which you have made, and then we have to just paste it with other side, and then our one packet will be ready. So now finally our packet is ready, and just we are going to paste it on our book. मतलब मैंने पूरा क्रिएट नहीं किया, बट जितना मैंने स्टिकर बनाया उसको मैंने बस एक पेज पे, एक पैकेट पे पेस्ट कर दिया है. नाउ इन द लास्ट पेज एक स्टोरेज तो होना चाहिए ना, जो मैं स्टिकर्स यूज़ करूँ तो उसको भरने के लिए. सो नाउ आई हैव सिंपली अटैच्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ सेलो टेप, एंड आई एम गोइंग टू फिल इट. And you can of course decorate it on your own sides and side, मतलब जैसे आपको करना है. यहाँ पे मैंने स्टोरेज लिख दिया, और इसी तरीके से मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट पेजेस बना लिए हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली अटैच दिस बुक, लाइक मतलब उसके साथ एक कोई भी आप कवर ले लो अपने बुक का, और उसके बाद फिर आप उसको कवर कर लो. सो हियर आई एम यूजिंग दिस वाइट शीट इन ऑर्डर टू कवर इट, और सिंपल वाइट शीट नहीं रहेगा. इसके अलावा आई एम गोइंग टू यूज सम ऑफ द डेकोरेटिव थिंग्स लाइक दिस washi tape which we have already made in the last video. Homemade washi tape, link is in the description, you can go and check it out. So we will use it and decorate it. Now we are going to use origami sheet. If you don't have origami sheet, then you can check out my one video which is of making the color sheets. Now you have to paste it according to your own size and your creativity. अब आप अपना नाम दे दो, टाइटल दे दो, जो भी देना है दे दो. यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम दूंगी और उसके साथ डेकोरेटिंग करूँगी. So our sticker book is almost ready. Now we are just going to apply transparent sheet, और हो गया. Now let's take a look. आप देख ही सकते हो फूड, फिर वर्ल्ड टूर, एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट, इमोजी, नेचर और स्टोरेज, कितने सारे स्टिकर्स हैं. सो एज आवर स्टिकर बुक इज रेडी, नाउ लेट्स टेक अ लुक फॉर सम शाउट आउट्स. I thank you all for your amazing birthday wishes. Let's meet in our next video. तब तक के लिए thanks for watching.